next topic is bilateral symmetry. Okay, bilateral means what? Two. Okay, so bi means two. So if a plane or unit cell divides it into two equal halves, okay, so if we have a crystal structure, okay, so by means of a plane or unit cell, so if we divide this crystal structure into two equal halves in such a way that the one half is the reflection of the other half, okay, so the plane, then this plane is referred as the plane of symmetry. So bilateral symmetry कहले कौन हम जदि सपोज आम गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर दि जाए, सो जदि आम गोटे प्लेन साहाय्य सो ताको जदि इक्वल टू हाफ्स रे डिवाइड करुचे ताहले से प्लेन को कौन कह ना प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, सो आम केमिति डिवाइड करबा ना गोटे पार्ट आउ गोटे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कौन पे कह जेमति कि सपोज आम मिरर रे आमर इमेज देखुचे माने आम जो भली ड्रेस पिंधिचे से भली भी ड्रेस पिंधि माने आमर कौन गोटे जेरक्स कॉपी जोटा आम कहूँ माने सिमिलर मीन्स गोटे माने कौन गोटे कॉपी टाइप रो. सो एठी हम कौन होची जदि गोटे साइड जो भली देखा सो नेक्स्ट बा अदर साइड भी से भली देखा. सो गोटे साइड रे एटम स्ट्रक्चर जो भली हेतिबो सिमिलर अदर साइड रे भी सिमिलर हेतिबो. सो गोटे साइड रे जेतेटा लैटिस पॉइंट थिबो अदर साइड रे भी सेतेटा लैटिस पॉइंट थिबो. सो सेतपे कहला one half must be the reflection of the other half, means so two sides or two halves must be similar or identical in nature. Okay, so this kind of symmetry is called bilateral symmetry. Okay, so for simplicity we can consider a cube. Okay, so cube is a basic or simple crystal structure. Okay, so in a cube there are three planes of symmetry. So this is one kind of plane, so this is another plane that divides, this is another. Okay, so in three ways we can divide this cube into two equal halves, and these planes are known as planes of or plane of symmetry. Okay, and this kind of symmetry is known as bilateral symmetry. Next come to center of symmetry. Okay, so the center of symmetry is a point in the crystal such that if a line is traced from any point on the figure through this point and produced an equal distance on the other side of the center of symmetry, okay, then it meets an identical point. So सेंटर ऑफ सिमेट्री कहले कौन बुझा. सो सिमेट्री आम जानले बायलैटरल सिमेट्री माने गोटे प्लेन द्वारा आम गोटे स्ट्रक्चर को टू इक्वल हाफ्स रे डिवाइड कर पारिबा. सो सपोज सिमिलरली एटा भी गोटे प्लेन आम कंसीडर कर पारिबा. सो एई प्लेन माने एई क्रिस्टल स्ट्रक्चर रे गोटे मिड पॉइंट रे बा गोटे मिड पोजीशन रे गोटे पॉइंट अछि. ओके, सो सेई पॉइंट थ्रू रे जदि आम लाइन ट्रेस करूचे आ ताको जॉइन करूचे जो प्लेन फॉर्मेशन हम, सो सही प्लेन जदि सही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को टू इक्वल हाफ्स रे डिवाइड करुची ताहले सही प्लेन जो पॉइंट थ्रू रे जाइची मिड पॉइंट थ्रू रे जाइची बा पास करिची, सो सेटा को हम कहबा कोन ना सेंटर ऑफ सिमेट्री. ओके, सो ए फिगर में देखि परिबा. ओके, सो सपोज दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज द प्लेन that cause symmetry in this crystal structure. Okay, and if we talk about these two corners, so these two corners will be in equal distance from these planes. Suppose r, so if we consider this is plus r, so this will be suppose minus r, or this is the mid point, suppose this upper part is plus r and the below part is minus r, so each distance will be equal. Okay, so a sense of symmetry is a powerful tool for the study of the internal structure of the crystal. So to study the internal structure, about the internal structure of a whole crystal, so it is the symmetry. Okay, so we should know about the symmetry, or we must
have some basic idea about the symmetry. Okay, so of course an ideal crystal cannot be obtained. There are always deviation from the ideal conditions. Okay, so these deviations from the ideal crystals due to some regions. What are those regions? So there are deviation at the surface where the periodicity condition breaks down. So our crystal structure first condition कौन? Regularity and periodicity of the atoms and lattice points. So जदि ये periodicity रे breakdown हला ताल तार surface रे कौन आसीबो बा deviation आसीबो. सो सेटा आइडियल क्रिस्टल हे रहइबो नाही. ओके, जोठी कि हमर सिमेट्री कौन हबो breakdown हबो. So second condition कौन? There are deviation due to dislocation, impurities and imperfection in the interior structures. So जदि dislocation means जदि गोटे lattice point जो जगह रहिबा कथा, so से जगह जदि dislocate बा तार present बा situation बा location change हो जाइछि बा किछि अलगा impurity बा किछि अलगा atoms add हो जाइछि, ताहले कोन हबो से तार कोन हबो ना symmetry भी changes आसीबो. सो वेरियस रीजन जो भी हमर कोन है ना symmetry भी changes आसीते. ओके, सो गोटे क्रिस्टल रो इंटरनल स्ट्रक्चर बा इंटरनल अरेंजमेंट विषय जानबा पई सो हमको तार सिमेट्री विषय मध्ये जानबा को पड़िबो.